Yep, I can start out by saying that I myself wasn't born in this country. I came here as a refugee, and because of that background, I have been very much interested and paid a lot of attention and have done a lot of work in a multicultural area, as well as in the science and education, because I'm a professor of physics. Multiculturalism in Victoria is strongest in this country, in Australia, and it is perhaps strongest in the world. In my electorate, Southeastern Metro, we have people from all different backgrounds, more than 140 or 150 nationalities before they came here, and also speaking around more than 200 languages, including dialects, and also the religion is 160 or so different religions. 160 different religions? Yep. So all the big one, Buddhism, Hinduism, Catholic, and not Anglican. Catholic, Christian, Anglican, so Christian, and we have Jewish people. We have Jewish people. We have some smaller groups as well. Baha'i, we do have Baha'i. Majority Muslims. Yeah, our Muslim is huge one, and the Muslim, as you know, they are Shiite and Sunni. Yeah, so there are many different groups, and. So can we have this message on our recording? Yes. Whatever you are saying. Yes, please. So already okay. Already शुरू हो चुका है. मेरे साथ बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट्रियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. हम लोग यहाँ पर अभी पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे हुए हैं, और जो अब भारत में चल रहा है 2 दिन से विवाद, तो मैं भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के विविध पार्टियों को, पूरे विश्व में क्या चलता है, ये ज़रा उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पर हमारे साथ मल्टी कल्चरल इसके ऊपर बात कर रहे हैं. यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं. मेरे साथ यहाँ पर है डॉक्टर चीन क्यू, ही इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ फॉर साउथ ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन, तो मेरे साथ है. तो आइए उनसे जानते हैं. वो इंग्लिश में कहेंगे, हम लोग इसको हिंदी में फिर आप लोगों को समझाएंगे. तो डॉक्टर चीन क्यू, आई कम फ्रॉम इंडिया वेयर देयर आर 7 रिलीजन्स: हिंदुइज्म, मुस्लिम, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, Buddhism, Sikhism, Jainism. So there are 7 major religions, and we are nearly 132 crores, 130 billion population of India, and every kilometer if we travel, our culture changes, our language changes, our way of dressing changes, our food changes. So such a diversified country, India, I come from India, and you say that you have 160 religions. Yep. So in Australia there are 160 different religions. We want to know how Australia sees these religions and how they treat. Please, sir. Yep. There are a few things about that. I'm not quite sure, but when people come to Australia, it's an open society, very democratic. And also people come here to build up their new life, either refugees or migrants with the business or with the skill. They come here and they build up a new life for themselves and for their children. And people accept the values of Australia, namely the democracy, the freedom, and we are very much a non-class society. Non-class society. So, see, non-class. So for India, we should have a non-caste society. Yeah. So that and then people come here and they respect the law, and also they adopt the values, and people are supported to for them to pursue their culture, their religions, and also their way of life, but as long as within the law. And the law is very democratic and very reasonable. We don't have a present law like some communist country, for example. Okay. So, and also people come here with more open mind, with a hard-working attitude, and they see the opportunity. That's another thing. We in Australia have a lot of opportunities for people to come here. Sometimes it's difficult for people. Take example of highly skilled. They come here and they couldn't find a job matching their skill, but they do have opportunity to do some of the things and re-qualify, or the children will flourish in this country. So in Victoria, in my electorate,
about 56 or so percent of people having their parents born overseas, either with parents. I myself was born overseas, so it's very rich and diverse. The population of Victoria is only 6 million, 6 point something. But we have so the different ethnic groups, they are the strength of our state. And our state is the most multicultural in Victoria, in Australia, and maybe overseas as well, in the world as well. In the world. In the world as well. Oh. And particularly the big groups, including the Indian migrants, the Vietnamese, most of them come here as refugees, and their children are now flourishing very well in the society because of opportunities, because of the education they receive, because of the law, because of the freedom that they can work and live in this country. So people cherish that and take the opportunities. And some of the big groups, including the Chinese, but the Chinese in generic name, but it's very different groups. Okay. So we have mainland Chinese, we have Hong Kong people, we have Taiwanese, and we have people born here a long time ago, because in the 18th and 19th century, a lot of Chinese workers come over here and work on the gold mine. So we have a long history. Having said that, we do have some, we have to recognize some of the wrongdoings in the past, particularly against the indigenous. So this state, also one of the states, is now moving toward a treaty. First on to recognize that we done things wrong to the indigenous people, and now we want to reconcile, and we will have assembly for the representative of the indigenous to have a voice in the parliament. It's not the same power as the lower house or the upper house, where they do have assembly, so they can bring up the issue. There are many issues, people, particularly for indigenous population. They were hunted down and killed. Tasmania, for example, one example. And more recent time, the children been taken away from the parents and put into some of the institutions, and a lot of physical, sexual abuse. Now we recognize that we have done something wrong, and now we want to reconcile. I will interrupt you. मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा. इन्होंने कहा कि यहाँ के जो ओरिजिनल्स हैं, इनके साथ बहुत अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, इनके ऊपर बलात्कार हुए, बहुत सारे अन्य अत्याचार यहाँ पर हुए. तो इन्होंने अब एक लॉ पास किया है कि इनके साथ जो इतने सालों से अन्याय किया है, तो इनसे हम माफ़ी मांगेंगे. तो किसी भी प्रोग्राम में यहाँ पे शुरुआत होती है, तो पहले उन ओरिजिनल्स, मूल निवासियों से माफ़ी मांगी जाती है. जैसे हम लोग हमारे कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं तो महापुरुषों को वंदन करते हैं, या महापुरुषों को वंदन नहीं करते, यहाँ के एबोरिजिनल्स को माफ़ी मांगते हैं और फिर अपना बात शुरू करते हैं. तो देखिए, हमारे यहाँ पर 2500 सालों से SC ST OBC के लोगों को मारा गया, पीटा गया, उनके अधिकार छीने गए, लेकिन आज भी किसी को इनसे माफ़ी मांगने की इच्छा प्रकट नहीं होती है. प्लीज सर. Yep. But now our state, particularly if you go everywhere, you see people coming not from a European background. You can see certain streets we have Lebanese people a lot. They've been here for some time. We have members of parliament with Lebanese background, Chinese background, Indian, Greek, Italian. And many others, and they all contributing in different way. For the Indian population here, in business, in IT, and in some of the skills that is very strong. Some of the people come here, and including my community for the Vietnamese background. We have people, not only doctor or engineers. The parents work so hard, 4 or 5 jobs just for their children to get education to be better and more successful. But also have people contributing to comedians. We have comedians, we have writers, we have famous chef, Luc Nguyen, for example. Some of the people, so they all find their niche and the opportunity to contribute. And the way to do that being supported by the law and the constitution and the democracy in this country. I think that's the key. And also because it's relatively a young nation compared to India or compared to China. मैं फिर से इंटरप्ट करूँगा. It is a very young nation.
ये 150 ईयर्स ही हुआ है इस देश को एस्टैब्लिश होके. सो ही इज सेइंग दैट इट इज़ अ वेरी यंग नेशन. बहुत पुराना इतिहास नहीं है इसको 2500 सालों का. तो जो इंडिया में 2500 सालों से भी ज़्यादा का इतिहास है, ये इतिहास ऑस्ट्रेलिया का बहुत यंग है. Yeah, please. And so the people, so young a nation that we don't have much tradition, but tradition is good, but sometimes it could hinder the progress because something that inbuilt and it's very hard to overcome tradition. Some of the perception, some of the divisiveness in the society will take a long time. For Australia, it's relatively young nation, so we have some disadvantage. We also have the advantage of being having equality for people who come here. Of course, I mean, people will have some opinion against some other, but in general, the law will not accept that. Okay, see. Yeah. So that's the advantage of a young nation. And so we, on the one hand, we don't have much of a tradition, but on the other hand, we have the a more modern starting base for people who come and contribute. So, I mean, always there are two sides of a coin. So that's So do the Australian government works for some particular religion, or they impose any religion on the people? that's not allowed by law. That is not allowable by law. Yeah. सरकार का कोई धर्म नहीं हो सकता. It is not allowable by law. यही वो कह रहे हैं. Yep. The religion has to be separated from the government. The government cannot advocate for any religion, even though that religion is the biggest, have the biggest following group in the population. It's still a religion. It's just never been something government can advocate for. It's not allowed. मोदी जी सुन रहे हो? People not पीपल कितने भी मेजॉरिटी में होने दो, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा. people cannot be discriminated against based on their religions, their sexual orientation. So we have a very liberal and progressive about whether you are a homosexual or not, and so on. So they're all equal in front of the law. And also the age. Recently, I have noticed about 10 years or so, or maybe slightly longer, in your CV you don't need to state your age. Okay. So you apply for job, you don't need to tell you whether you man or woman or homosexual, or you don't have to put your age. Age also. Age, you don't have to. And if you are asked about those issues, the employer or potential employer could be in trouble. Okay. Why are you asking for that? So you. So it has nothing to do with the job. Also religion. Do you want to mention the religion? No, you don't have to unless you want to. But Okay. the employer, the potential employer, the recruiter, not allowed to ask your sexual orientation, your age, or religion, because that has nothing to do with the job at hand. Unless it's a job, for फिर से example. मैं समझाता हूँ. यहाँ पर किसी एम्प्लॉयर को जिसे नौकरी देनी है, उसे किसी का धर्म पूछने की, किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को पूछने की, जैसे मेल फीमेल होता है, ये पूछने की उसको अनुमति नहीं है. जब तक वो खुद से बताना नहीं चाहता, तब तक उसको किसी का धर्म पूछने की अनुमति नहीं है. हम अगर ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हो तो को पैसेंजर खोद के हमको जात पूछता है, उपजात पूछता है. यहाँ पर जात छोड़ो, धर्म बताना भी अलाउड नहीं है. Yep. Unless it's a job particularly to do religion, for example, a Catholic church, then some of the job require to have a Catholic background, for example. Then they may be allowed. But in general, if you come and work at factory, why should your religion have something to do with your work? Yes. Yeah. And so we treat people equally in front of the law, but there's still some problems, pockets of problems, but that the law not allow that. So in a way, that's why I like Buddhism. My family come in Vietnam, and Buddhists nominally, because we don't go to temple that often because of the war and so few other things. But some of the Buddhist teaching I love it so much. For example, Buddhism say that everyone is equal, and in everyone there is a Buddha. They have the seed of a Buddha to become enlightened. Wisdom everyone should be has it. there. It's not exclusive to anyone. Yes. It's not exclusive to any It is class. no caste, no religion. Yeah. And I've written a book, unfortunately in Vietnamese, about modern
modern science and so Western science and Oriental philosophy. I treat Buddhism as a philosophy rather than religion in my book. See, yes. Yeah, and also mention something like Tao and some of the teaching in the East and compare because my background in quantum physics, so there's a lot of things that I can see very interesting. सो बहुत अच्छा यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है जिससे भारत के लोगों को सोचने की समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर 160 डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग, और उनकी वो जो कल्चर है उसे यहाँ की सरकार सिर्फ रोकती नहीं है, उनको बढ़ावा भी देती है, उनको सेलिब्रेट करती है। अगर कोई चाइनीज़ है, चाइनीज़ में भी यहाँ पर अलग अलग सेक्ट है, मेनलैंड चाइनीज़ है, कोई हांगकांग के चाइनीज़ है, चाइनीज़ में भी अलग अलग सेक्ट है, इंडियंस यहाँ पर है, कई सारे रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं और वो अपना अपना धर्म उनके जो कल्चर है उस हिसाब से प्रोफेस कर सकते हैं। तो जिन लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा से तकलीफ होती है, हमारे बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा ये भारत के बौद्धों का कल्चर है। तो अगर ये भारत के बौद्धों का कल्चर है तो इंडियन गवर्नमेंट को, बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को इसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए अगर वो हमारा कल्चर है? तो इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि वर्ल्ड इतना आगे जा रहा है। ये 100-200 साल पुराना देश आज वर्ल्ड का सबसे एजुकेशन में सेकंड नंबर पे है, राइट? सबसे रहने लायक देश वर्ल्ड में सेकंड नंबर है। मोस्ट लिवेबल सिटी इन वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर भारत के लोग, सबसे प्रोमिनेंट लोग भारत को छोड़कर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्यों इतने अच्छे अच्छे लोग भारत को छोड़ रहे हैं। क्योंकि आपकी गवर्नेंस गलत है, आप देश को ठीक से नहीं चला पा रहे हो। भारत जातियों से भरा पड़ा है, यहाँ पर जात छोड़ो, धर्म बताना गुनाह है। आप जात पूछ पूछ कर अन्याय करते हो, धर्म पूछ पूछ कर सिटीजनशिप देने वाले हो, और भारत के बाहर एक दिन भारत खाली हो जाएगा। किसके ऊपर आप राज करोगे? किनके ऊपर आप कानून बनाओगे? किसके लिए आप CA/NRC बनाओगे? और इसलिए मैं ये वीडियो आपके भले के लिए कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को, भले कोई भी गवर्न होने दो, भारत हमारा देश है, पिछले कई हज़ारों सालों से हम चले आ रहे हैं। भारत को तबाह मत करो, भारत को रहने लायक बनाओ। भारत को छोड़कर लोग वर्ल्ड में जा रहे हैं। एक समय था सम्राट अशोक बुद्ध के काल में वर्ल्ड के लोग भारत में आते थे। कहीं ना कहीं आपको आपके गिरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है, क्यों भारत की इकोनॉमी ख़राब हो रही है, क्यों भारत का एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो रहा है, क्यों हमारे बच्चों को यूक्रेन में जाकर पढ़ाई करने की नौबत आती है। ये भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हो, आने वाला हो, अभी का हो, इसको अपने गिरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है। ये वीडियो मैंने खास भारत के लिए, क्योंकि मुझे भारत से प्यार है, इंडिया से प्यार है, मैं नहीं देख सकता अपना देश टूटते हुए, और इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों को इंटरव्यू इसलिए बताना चाहता था कि ये वर्ल्ड में काम होता है। आप सिर्फ भारत के बाहर स्टेज पर जाकर फ़ोटो खींचते हो, कम से कम ऐसी इंटरव्यू हमारे जो लोग, जो अर्नब जैसा एक जानवर ही है जो दिन भर भोगता रहता है, ऐसे इंटरव्यूज़ कभी करा के दिखाओ। भारत के बाहर क्या होता है, भारत के बाहर सिर्फ आप लोग जाकर क्या करके आते हो पता नहीं, तो कम से कम ये भारत के बाहर किस तरह से अपने देश को उभार रहे हैं। सिर्फ 150 साल हो गया है वर्ल्ड की। आज ₹1 जो इंडिया का है वो यहाँ पर $1 मेरे ख्याल से 54 रुपीज़ देकर हमें यहाँ का $1 मिलेगा। 150 साल का देश है, उनकी इकोनॉमी हमसे 54 गुना आगे है, 54 गुना। हमें $1 ऑस्ट्रेलियन खरीदने के लिए 55 रुपीज़ लगेंगे, हमारा ₹1 सोचो कहाँ पर यहाँ पर है। तो 100 साल का देश हमसे इतने आगे है। लाखों 2500 सालों से हमारा ये देश चला आ रहा है, आज कहीं पर नक्शे में नहीं है। और आप अपने आप को विश्व गुरु बताते हो, विश्व गुरु। क्या आपकी इकोनॉमी रह गई है? और इसलिए मैं आज आपसे विनती करना चाहता हूँ, भारत के लोगों ने आपको देश चलाने के लिए दिया है, आप पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक के नौकर हो, प्लीज़ हमारा देश ठीक से चलाइए। अगर नहीं चला सकते किसी और को दे दीजिए ताकि वो देश ठीक से चलाए और भारत की तरक्की करें। बस इतनी विनती मैं
ऑस्ट्रेलिया के धरती से भारत के सभी राजनेताओं को करना चाहता हूँ। हमने आपको वहाँ पर धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा, हमने आपको वहाँ पर किसी कल्चर का प्रचार करने नहीं भेजा, भारत को संभालने के लिए भेजा है। प्लीज़ हमारा देश ठीक से संभालिए। जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।